Okay, so Heisenberg was basically, his full name is Werner Heisenberg. Okay, so he is a very famous German scientist. Okay, and he in 1924 basically he worked under Niels Bohr, and at the age of 26 he published his very famous paper uh, on this quantum mechanics. Okay, so his age was only like 23 years old, and that paper was published in 1925 on this quantum mechanics and how things work. And then he was awarded a Nobel Prize in 1932. So his works were really remarkable, and this is the theory because on which he received the Nobel Prize. Okay, so what this theory says is, according to Heisenberg, uncertainty principle, it is impossible to determine the exact position and momentum of an electron around the nucleus simultaneously. So what Bohr told us that we can calculate the radius, we can calculate the energy, we can calculate the position and momentum, everything for an electron. But Heisenberg came up with this idea that it is impossible to exactly predict the position or momentum of the electron simultaneously. Like if I am finding out the position, then momentum will be different, and if I am finding out the momentum, then position will be different. So according to this his theory, he gave a formula where delta x into delta p is greater than or equal to h upon 4 pi. Okay, what is delta x here? Delta x is uncertainty in position. What is delta p here? This is uncertainty in momentum. Okay, and just give me 1 minute, everyone. Okay, and delta p, that is change in momentum. What is momentum? Mass into velocity. So we can write down change in mass into velocity. And since mass of the electron is constant and velocity is the variable one, so this will become m into delta v. So we can write down, substituting the value of momentum here in this equation, we can get delta x into m. Delta v is is greater than or equal to h upon 4 pi, which is your this very important formula for exam point of view. So if change in position is tending to 0, that means change in velocity will be tending to infinity. Okay, and if change in velocity is tending to 0, that means change in position is going to be infinity. So altogether we can say that we cannot find out the exact position as well as velocity of an electron which is moving around the nucleus at one time. Write down this.
Next, here write down this theory is based on the wave particle duality of matter. मैटर के वेव और पार्टिकल नेचर के ऊपर ही हाइजेनबर्ग ने इस प्रिंसिपल को जनरेट किया था. राइट डाउन दिस. Now, can anyone tell me why can't we find out the momentum as well as position of the electron at the same time? What could be the reason? Can anyone think of it? Can anyone think of anything, something here? चलो देखो. लेट्स टेक कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है. ओके. यस रेशमा, यू आर समवेयर करेक्ट. ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है. ओके. अभी मुझे इस इलेक्ट्रॉन का अगर पोजीशन पता करना है, इसका मेजर करना है कि मुझे पोजीशन क्या है, तो हमको दिख तो रहा नहीं है इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है. वी कैंट सी इट. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक अ फोटोन विच हैज सम एनर्जी. फिर जब ये फोटोन आके इस पे कोलाइड करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से पोजीशन पे वो कोलाइड कर रहा है. ओके. बट फोटोन के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ऑफ कोर्स उसके पास खुद की एनर्जी है. जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है तो अपना कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. और मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल पोजीशन था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. ओके. सो it is very difficult to measure the position as well as momentum of any electron, any subatomic particle in an atom. Okay, या तो आप एक टाइम पे पोजीशन ही निकाल पाओगे तब तक मोमेंटम चेंज हो चुका होगा, और अगर मोमेंटम निकाल रहे होगे तब तक पोजीशन चेंज हो चुका होगा. इज इट क्लियर? अगर मैं ये सेम लॉजिक लगाऊं किसी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में, जैसे बास्केटबॉल ले रहे हैं, ठीक है. अब बास्केटबॉल को आप एग्जैक्टली ड्रिबल करते हो. ओके. तो बास्केटबॉल की पोजीशन आप मेजर कर सकते हो बिकॉज आप उसको देख सकते हो. ठीक है. आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितना मोमेंटम पास किया है, मोमेंटम पास करने पे जो आपके पास बॉल है वो कितना दूर गया है. तो दैट यू कैन फाइंड आउट बिकॉज ऑफ मास जो है बॉल का वो ज्यादा होता है. ओके. और फोटोन का जो मास है दैट इज वेरी स्मॉलर देन द मास ऑफ द बॉल. तो इस वजह से आप फोटोन के रिस्पेक्ट में कोई भी चीज का पोजीशन एंड मोमेंटम जो है एट द सेम टाइम यू कैन नॉट फाइंड आउट. गॉट इट? Okay, fine. So do this one simple question. A microscope using suitable photon is employed to locate an electron in an atom.
with a distance of 0.1 angstrom. What is the uncertainty involved in the velocity? Find out this. Try to solve this. ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा वी जो है ये आपको लाइक पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता रहे हैं, ये एरर बता रहे हैं कि कितने डिफरेंस पे अनसर्टेनिटी है, इसलिए ऊपर डेफिनेशन में लिखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब डेल्टा एक्स मतलब कितना अनसर्टेन है उसका पोजीशन, डेल्टा पी मतलब कितना अनसर्टेन है उसका मोमेंटम. राइट डाउन दिस, डू दिस क्वेश्चन. Done with the question? चलो देखो, फर्स्ट टाइम है तो मे बी नहीं बन रहा होगा. ओके, तो क्वेश्चन बोले द माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन टू यू 0.1 एंगस्ट्रॉम. ओके, अब इसे मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और यू कैन राइट डाउन 10⁻⁻11 मीटर. फाइंड आउट क्या करना है आपको, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. तो फॉर्मूला क्या है आपका, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी is equal to h upon 4 pi. Delta x is given to you, that is 10⁻⁻11 मीटर. मास आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, ये आपको फाइंड आउट करना है. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7. ठीक है, अब मैं अपना थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने का ट्राई करूँगी. ओके, तो उसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, 9.1 को 9 ही रख लेती हूँ ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, मैं 6.626 को 6.6 कर दूँ इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 22/7. 7 ऊपर चले गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर में आ गया 10⁻⁻11. 9.1 को मैंने 9 लिख दिया, 10⁻⁻31. ओके, सो 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, तो 0.6 हो जाएगा ये. ओके, ये हो गया आपके पास 2 3 ज़ा 6 0.3, ये हो जाएगा 0.1, 3 3 ज़ा 9. तो ऊपर क्या कितना बचा मेरे पास, 0.7 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻11
इंटू 10⁻⁻31। ओके, इसको पूरा ये सब सॉल्व कर दो, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 7/12 इंटू 10⁻7। ओके, गॉट इट? So this is your uncertainty in velocity, that is meter per second. तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह करके आप अपना कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा आसान कर सकते हो. Okay, do one more question. If uncertainty in position and momentum is equal, then calculate uncertainty in velocity. Do this question. हाँ, संपदा इस टाइप के क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस वगैरह गिवन है दैट इज डेल्टा एक्स ओनली, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ओनली. Okay, done? Everyone done with the question? नहीं कर पा रहे हो, देखो इधर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करते रहो. फॉर्मूला क्या है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? दैट इज यू हैव डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, ओके, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई. तो ये बोल रहा है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल है, तो मैं डेल्टा एक्स मान लेती हूँ, तो इसको भी डेल्टा एक्स मान लिया, ये तो डेल्टा एक्स है ही, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई. एंड व्हाट इज डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स को मैं लिख सकती हूँ एम इंटू डेल्टा वी. डेल्टा एक्स नहीं तो डेल्टा पी कर लो, बेटर रहेगा. मोमेंटम को हम एम और वी से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसको डेल्टा पी कर लो, डेल्टा पी कर लो. तो ये हो जाएगा एम इंटू वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई अंडर रूट. हमें क्या निकालना था? वेलोसिटी. सो डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एम अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई.
दिस इज योर आंसर। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ओके फाइन। एक ऐसा करते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। The Heisenberg uncertainty principle is one of a handful of ideas from quantum physics to expand into general pop culture. It says that you can never simultaneously know the exact position and the exact speed of an object, and shows up as a metaphor in everything from literary criticism to sports commentary. Uncertainty is often explained as a result of measurement, that the act of measuring an object's position changes its speed, or vice versa. The real origin is much deeper and more amazing. The uncertainty principle exists because everything in the universe behaves like both a particle and a wave at the same time. In quantum mechanics, the exact position and exact speed of an object have no meaning. To understand this, we need to think about what it means to behave like a particle or a wave. Particles, by definition, exist in a single place at any instant in time. We can represent this by a graph showing the probability of finding the object at a particular place, which looks like a spike, 100% at one specific position, and 0 everywhere else. Waves, on the other hand, are disturbances spread out in space, like ripples covering the surface of a pond. We can clearly identify features of the wave pattern as a whole, most importantly, its wavelength, which is the distance between two neighboring peaks, or two neighboring valleys. But we can't assign it a single position. It has a good probability of being in lots of different places. Wavelength is essential for quantum physics because an object's wavelength is related to its momentum, mass times velocity. A fast-moving object has lots of momentum, which corresponds to a very short wavelength. A heavy object has lots of momentum even if it's not moving very fast, which again means a very short wavelength. This is why we don't notice the wave nature of everyday objects. If you toss a baseball up in the air, its wavelength is a billionth of a trillionth of a trillionth of a meter, far too tiny to ever detect. Small things, like atoms or electrons, though, can have wavelengths big enough to measure in physics experiments. So if we have a pure wave, we can measure its wavelength and thus its momentum, but it has no position. We can know a particle's position very well, but it doesn't have a wavelength, so we don't know its momentum. To get a particle with both position and momentum, we need to mix the two pictures to make a graph that has waves, but only in a small area. How can we do this? By combining waves with different wavelengths, which means giving our quantum object some possibility of having different momenta. When we add two waves, we find that there are places where the peaks line up, making a bigger wave, and other places where the peaks of one fill in the valleys of the other. The result has regions where we see waves separated by regions of nothing at all. If we add a third wave, the regions where the waves cancel out get bigger, a fourth and they get bigger still, with the wavy regions becoming narrower. If we keep adding waves, we can make a wave packet with a clear wavelength in one small region. That's a quantum object with both wave and particle nature. But to accomplish this, we had to lose certainty about both position and momentum. The position isn't restricted to a single point. There's a good probability of finding it within some range of the center of the wave packet. And we made the wave packet by adding lots of waves, which means there's some probability of finding it with a momentum corresponding to any one of those. Both position and momentum are now uncertain, and the uncertainties are connected. If you want to reduce the position uncertainty by making a smaller wave packet, you need to add more waves, which means a bigger momentum uncertainty. If you want to know the momentum better, you need a bigger wave packet, which means a bigger position uncertainty. That's the Heisenberg uncertainty principle, first stated by German physicist Werner Heisenberg back in 1927. This uncertainty isn't a matter of measuring well or badly, but an inevitable result of combining particle and wave nature. The uncertainty principle isn't just a practical limit on measurement, it's a limit on what properties an object can have, built into the fundamental structure of the universe itself. Okay, so I hope you people had like little bit of idea, because the thing is quantum mechanics is one of the topic which is
very difficult to understand. Okay, it's like very difficult, but you should get some idea that what it is actually, and how to solve the questions. Basically, this is what is going to matter, because there is no way that you can understand this quantum mechanics and quantum concepts in just one chapter, okay, or one class or two class. It is a whole other world. But what is important to you people, that is what I am teaching you here. Okay, so if anyone have this interest to know more about it, so there is this Richard Feynman. Okay, this is totally out of syllabus, nothing related to this. उनके कुछ 2 या 3 बुक्स हैं ऑन, कुछ वॉल्यूम्स हैं ऑन क्वांटम मैकेनिक्स. बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो दे कैन गो थ्रू इट. आपको ऑनलाइन भी हो सकता है रिचर्ड फेनमैन ऑन क्वांटम थ्योरी. ठीक है, सो इफ यू वांट यू कैन read this. This is totally extra on your depends on your interest. Okay, fine. कौन से सेकंड इक्वेशन की बात कर रहे हो प्रशस्ति? मैम जहाँ पे आपने डेल्टा पी रखा है वहाँ पे हम डेल्टा एक्स की स्क्वायर, वहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाल के. हाँ, तो इट्स द सेम थिंग ओनली ना, डिफरेंस नहीं है. मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कर दिया है. अब आप ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा वी. फिर यहाँ से आपने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई. तो यहाँ से आप लाइक नॉट डेल्टा एक्स का नहीं, डेल्टा पी का वैल्यू निकालोगे डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर डेल्टा पी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे. सो और एनीवेज डेल्टा एक्स और डेल्टा पी तो इक्वली है ना, तो उतना लॉन्गर मेथड में जाने का क्या रिक्वायरमेंट है. ओके मैम. इट्स ऑलवेज बेटर टू सॉल्व द क्वेश्चंस इजीली, नो. यस मैम. Okay, so now after this हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बोहर का जो मॉडल था वो क्या हो गया, फेल हो गया. ऑफ कोर्स, बिकॉज बोहर के सारे मॉडल्स में ही सेड दैट कि सब कुछ आप एक्यूरेटली निकाल सकते हो. सो वी विल टॉक अबाउट नाउ limitations of Bohr model of atom. So first limitation, first point, it is applicable only for single electron system. ठीक है, जो भी बोहर मॉडल के कॉन्सेप्ट थे वो जिसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी के लिए वो एप्लीकेबल थे. उसके अलावा जिनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 या 3 4, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो रहा था. नेक्स्ट पॉइंट, it is not consistent with de Broglie hypothesis. ना ही डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को फेवर कर रहा था एंड ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को. Then third point, just 1 second. Third point, it could not explain splitting of lines in electrical and magnetic field.
सो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड में हमने ऐसे बोला था ना, प्रिज्म से पास करके हमको डिफरेंट डिफरेंट लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है. तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसे हो रहा है, क्या है वो चीज़ें. ही कुड नॉट गिव द आइडिया ऑफ इट. देन फोर्थ, नो एक्सप्लेनेशन was given for quantization of angular momentum. So during the starting of Bohr model, when we have started the postulates of Bohr model, so in that we have talked about the angular momentum, if you remember. Okay, so that angular momentum, that is nh upon 2 pi, we have talked about that. So उसके क्वांटाइजेशन में मतलब हम n से q मल्टीप्लाई कर रहे हैं. He could not explain all these things. Okay, so we have like done this angular momentum is equal to mvr, and then we said that mvr is equal to nh upon 2 pi. So from where this nh upon 2 pi is coming and what is its logic, he could not explain all those things. So these are four major limitations of Bohr's model after the discovery of, or not discovery, after the theory of de Broglie's wavelength and Heisenberg's uncertainty principle. Okay. So next topic is wave mechanical model of atom. अब हम एटम को एकदम अलग तरीके से देखेंगे. जो भी आपके दिमाग में पिक्चर है एटम की, कि सेंटर पे न्यूक्लियस है और साइड में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज नॉट द केस ऑफ फॉर एन एटम. ठीक है, वो एकदम उसको अभी जो भी इस चैप्टर के हिसाब से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, बट जो भी आइडिया है आपके हेड में एटम का, दैट इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. Okay, so this is also known as quantum mechanical model of atom. ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या एटम का मॉडल दिया है वो हम यहाँ पढ़ेंगे. सो इसमें राइट डाउन, आफ्टर द फेलियर ऑफ Bohr model of an atom, a new model is derived by Erwin Schrodinger, known as wave mechanical model of atom. This model consistent with de Broglie hypothesis as well as Heisenberg's uncertainty principle. Write down this.
Okay, so from here हम this quantum mechanics and this quantum mechanical model of an atom is totally based on calculations. ठीक है, calculations पे ही इसका बेस है, और उसके बेसिस पे हमने ये डिजाइन किया है कि एटम का जो स्ट्रक्चर है, एटम जो है वो कैसा हो सकता है. So write down, in this model Schrodinger assume electron as a 3D wave. ठीक है, उन्होंने वेव की तरह इलेक्ट्रॉन को एज्यूम किया, विच इज प्रेजेंट इन पॉजिटिव फील्ड ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, जो न्यूक्लियस के पॉजिटिव फील्ड में प्रेजेंट है. एंड देन ही डिराइव्ड एन इक्वेशन. ओके, सो श्रोडिंजर wave equation is a mathematical expression describing the energy and position of the electron in space and time, taking into account the matter wave nature of electron inside an atom. So Schrodinger ने एक wave equation, mathematical wave equation derive करी, which was going to tell you about the energy and position of the electron. ये कंसिडर करते हुए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का बोथ मैटर एज वेल एज वेव नेचर को कंसिडर करते हुए. ओके, सो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो तीन चीज़ों पे बेस्ड था. एक तो क्लासिकल मतलब वेव इक्वेशन पे बेसिकली, देन डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पे, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अच्छा, अब इसमें और डिटेल में अगर हम जाएंगे तो बेसिकली हम फंस जाएंगे. ओके, इट क्वांटम मैकेनिक्स इज अ लूप. आप जितना उसको समझने की कोशिश करोगे उतना कंफ्यूजन होगा. तो मैं सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रही हूँ. ठीक है, तो जो वेव इक्वेशन थी वो वेव इक्वेशन थी del square psi by dx square plus del square psi by dy square plus del square psi by del z square plus 8 pi square m by h square e by v psi is equal to 0. अच्छा, इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एग्जाम में नहीं आता है. तो यहाँ पे 8 पाई ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है. m is here mass of electron, h here is Planck's constant. Okay, जो this is del square by जो d x square या फिर y square या z square जो भी आ रहा है, that is total differentiation with respect to x, y and z plane. ठीक है, x, y, z के प्लेन में क्या डिफरेंशिएशन आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस पर्टिकुलर थिंग. आप लोगों ने डिफरेंशिएशन मैथ्स में पढ़ना चालू कर दिया होगा ना. E is total energy, V is your potential and psi is wave function. ठीक है, तो हमारा जो सारा काम है वो साई से ही आएगा, दैट इज वेव फंक्शन से ही पूरा एटम को हमको समझना है. ठीक है, राइट डाउन दिस.
Done writing? Now, what is the physical significance of psi? That is your wave function. So write down physical significance of psi. What does this mean? Okay. So psi is a wave function. ठीक है, आपको पता है हर चीज किसी ना किसी का फंक्शन होता है. डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना. दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस, फंक्शन ऑफ दैट. हैव यू स्टडीड अबाउट दिस? डिफरेंशिएशन में फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा. तो वैसे ही वेव इज अ फंक्शन in the similar way, okay, which should be a finite. एक तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होना चाहिए, कंटिन्यूस वैल्यू होना चाहिए, एज वेल एज डिफरेंशिएबल. हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वैसा होने चाहिए. बट इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. साई का कोई फिजिकल मैथमेटिकल टर्म है वो, बट उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस मैं फिजिकली नहीं बता सकती. हाँ, ये साई है, दिस इज योर साई. दैट डज नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस. बट साई स्क्वायर, ओके, हैव, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देन इट हैव फिजिकल significance. And what does it donates? Yeah, it tells you, denotes, basically it denotes the probability of finding an electron around the nucleus. So what is the physical significance of psi? It does not have any physical significance, but if we do psi square, then it do have a physical significance, and that is going to tell you the probability of finding the electron around the nucleus. Probability, not the exact value, exact position, nothing. कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के होने के चांसेस मैक्सिमम प्रेजेंट है. ठीक है. अच्छा, श्रोडिंगर इक्वेशन के ऊपर एक काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है. Like, let me show you that, 1 second. So एक पैराडॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग है, स्टोरी आप बोल सकते हो. इट इज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, नॉट द एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट, कुछ नहीं है, बट एक थॉट प्रोसेस है श्रोडिंगर का, एंड दैट ही एक्सप्लेन्ड विद Schrodinger's cat. Okay, so watch this video and just let me know if you find it interesting or not. Austrian physicist Erwin Schrodinger is one of the founders of quantum mechanics, but he's most famous for something he never actually did, a thought experiment involving a cat. He imagined taking a cat and placing it in a sealed box with a device that had a 50% chance of killing the cat in the next hour. At the end of that hour, he asked, "What is the state of the cat?" Common sense suggests that the cat is either alive or dead. But Schrodinger pointed out that according to quantum physics, at the instant before the box is opened, the cat is equal parts alive and dead at the same time. It's only when the box is opened that we see a single definite state. Until then, the cat is a blur of probability, half one thing and half the other. This seems absurd, which was Schrodinger's point. He found quantum physics so philosophically disturbing that he abandoned the theory he had helped make and turned to writing about biology. As absurd as it may seem, though, Schrodinger's cat is very real. In fact, it's essential. If it weren't possible for quantum objects to be in two states at once,
the computer you're using to watch this couldn't exist. The quantum phenomenon of superposition is a consequence of the dual particle and wave nature of everything. In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time. The wavelength of an object limited to a small region of space can't be perfectly defined, though, so it exists in many different wavelengths at the same time. We don't see these wave properties for everyday objects because the wavelength decreases as the momentum increases, and a cat is relatively big and heavy. If we took a single atom and blew it up to the size of the solar system, the wavelength of a cat running from a physicist would be as small as an atom within that solar system. That's far too small to detect, so we'll never see wave behavior from a cat. A tiny particle like an electron, though, can show dramatic evidence of its dual nature. If we shoot electrons one at a time at a set of two narrow slits cut in a barrier, each electron on the far side is detected at a single place at a specific instant, like a particle. But if you repeat this experiment many times, keeping track of all the individual detections, you'll see them trace out a pattern that's characteristic of wave behavior, a set of stripes, regions with many electrons separated by regions where there are none at all. Block one of the slits and the stripes go away. This shows that the pattern is a result of each electron going through both slits at the same time. A single electron isn't choosing to go left or right, but left and right simultaneously. This superposition of states also leads to modern technology. An electron near the nucleus of an atom exists in a spread out wave-like orbit. Bring two atoms close together, and the electrons don't need to choose just one atom, but are shared between them. This is how some chemical bonds form. An electron in a molecule isn't on just atom A or atom B, but A plus B. As you add more atoms, the electrons spread out more, shared between vast numbers of atoms at the same time. The electrons in a solid aren't bound to a particular atom, but shared among all of them, extending over a large range of space. This gigantic superposition of states determines the ways electrons move through the material, whether it's a conductor, or an insulator, or a semiconductor. Understanding how electrons are shared among atoms allows us to precisely control the properties of semiconductor materials like silicon. Combining different semiconductors in the right way allows us to make transistors on a tiny scale, millions on a single computer chip. Those chips and their spread out electrons power the computer you're using to watch this video. An old joke says that the internet exists to allow the sharing of cat videos. At a very deep level, though, the internet owes its existence to an Austrian physicist and his imaginary cat. Okay, so quantum mechanics is actually a very complicated topic. Okay, so if Schrodinger himself left quantum mechanics because he couldn't understand it properly, so like it's very difficult for us to understand. Okay, so if you don't understand it properly, don't get disheartened that you're not understanding it, because जितना हमको एग्जाम में चाहिए उतना we will definitely be able to do it, but इसको properly detail में अगर समझना है, that is very difficult. Okay, so Schrodinger equation, this wave equation, gave us a lot of information. Okay, and what are those information? So first is your node. What is a node? It is a point at which psi square is 0. What does this mean? That the probability of finding the electron at this point is 0. That is known as node. So that is probability of finding electron is 0 at this particular point. Then we have antinode. What is antinode? Point at which psi square is maximum. That is probability of finding
the electron is maximum. So it is the point or position where you can, the possibility of finding the electron will be maximum. Now next is orbital. What is orbital? Orbital is a region in space around the nucleus where probability of finding the electron is maximum. Okay, so there is not much difference between antinoid and orbital. Antinoid is basically at a particular point and orbital is a region. Okay, it will be a whole area. और यहाँ पे जो probability होती है इलेक्ट्रॉन को find out करने की, that is mostly 90 to 95% होती है. 90 to 95% of the time electron will be present here only. Okay, next point here, orbitals do not define definite path of electron. ठीक है, ऑर्बिटल में मुझे कुछ नहीं पता इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, वो कहीं भी मूव कर सकता है. ओके, rather they define probability of finding electron in various regions. That's it. It is just going to tell you the probability of finding the electron. For example, मान लो मैं ये न्यूक्लियस लिया मैंने, सेंटर पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास में जो ये रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा. धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा दूर तो होगा नहीं न्यूक्लियस के, धीरे धीरे ये जो डॉटेड लाइन है आपको वो कम दिखने लग रहा है, विच मीन्स दैट की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग. तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की, वो है न्यूक्लियस के पास में. इज इट क्लियर? तो कोई भी डेफिनेट रीजन नहीं होता है एक्चुअली, लाइक कहीं लाइन ऐसा कुछ खत्म नहीं हो रहा कि मैं ऐसे न्यूक्लियस बना के ऐसा सर्कल बना दूं, इसके बाहर का नहीं होगा, कोई डेफिनेट रीजन नहीं है. इट कैन बी लाइक इन्फिनाइट, बट मैक्सिमम कहाँ होगा, न्यूक्लियस के पास में. तो यहाँ पे सेंटर पे मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे लेस probability of finding the electron. Okay, write down this. Done writing? Okay, now यही जो ऑर्बिटल है, ये जो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहेगा, वो आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं. सो नाउ शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स.
तो ये सब ध्यान रखना है कि ये हमने पहले एटम को देखा है और फिर फाइंड आउट किया नहीं, इक्वेशंस सॉल्व की गई है, देन अटेम्प्ट किया गया है कि एटम का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए। तो जो पहला शेप है ऑर्बिटल का, दैट इज योर एस ऑर्बिटल, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, है ना। हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे थे ना, 1s2 2s2 लाइक दिस। तो एस ऑर्बिटल जो है इट इज स्फेरिकल इन नेचर। So s orbitals are spherical in nature. Hence, they do not contain any angular node. लाइक नोड नहीं है उसमें कुछ भी, मतलब स्फेरिकल है तो ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं है जहाँ पे मैं ये बोल दूँ कि इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। देयर इज ऑलवेज सम, भले 1% चांस हो, 2% चांस हो, बट प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी, जीरो कभी नहीं होगा। सो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, तो ये एक 3D में इमेजिन करना है इसको, ठीक है। तो दिस इज योर एस ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल इन नेचर। यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और धीरे धीरे वो प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। सो दिस इज योर एस ऑर्बिटल। अभी ये बस एस ऑर्बिटल 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s भी हो सकता है। तो अगर ये 1s छोटा साइज का है तो 2s इसी के ऊपर ओवरलैप करेगा बड़े साइज में, 3s उसी के ऊपर ओवरलैप करेगा और बिगर साइज में। दिस इज अबाउट योर s orbital. This is how your s orbital looks. Next is p orbital. p orbitals क्या है? इनका डम्बल शेप होता है। So p orbitals are डम्बल इन शेप। तो आपने देखा होगा जिम में डम्बल यूज करते लोग एक्सरसाइज करने के लिए, तो इट्स द सेम थिंग, उसी टाइप का शेप होता है। अब p जो आपके पास ऑर्बिटल है उसके फर्दर सबशेल, लाइक p इज अ सबशेल, इधर बोल दो आप सब शेल, और p सबशेल कर देते उसको। अब p सबशेल के अपने 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो आप p ऑर्बिटल्स भी उनको बोल सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट p इज एक्चुअली अ सबशेल। अब इसके जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो हम इस तरीके से, अगर मैं बॉक्स के रेस्पेक्ट में दिखाना चाहूँ तो p एक x एक्सिस में, p एक y एक्सिस में और p z एक्सिस में। अगर मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, this is x, this is y and this is z. So one orbital is in the dumbbell shape like this in x axis. तो ये सिर्फ और सिर्फ x axis में मिलेगा। अब इसमें भी यहाँ पे जो न्यूक्लियस के पास में होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और धीरे धीरे वो डिक्रीज करते रहेगा। बट सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट इज वो नोड है आपका। इसको हम बोलते हैं लोब्स, लाइक दिस इज योर लोब। तो ये हो गया आपके पास p x एक्सिस का लोब, दिस इज x y एंड z। इस तरीके से कुछ हो जाएगा, मैंने ऐसे डेफिनेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बट रियलिटी में कुछ डेफिनेट होता नहीं है ना। इट इज लाइक इन्फिनिटली इस डम्बल शेप में कहीं भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, बट 90 to 95 इसी एरिया में रहेगा। दिस इज योर for y axis, that means this is py, and then x y and z, so it will be in z axis like this, so it looks like this, p z, okay. These are your 3 orbitals of p subshell. अच्छा, ये बेसिकली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम एड्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले आता है आपके पास शेल, ओके। यहाँ पे मैं
ड्रॉ कर देती हूँ। पहले आएगा सेल, ओके 1 सेकेंड एवरीवन। यस, सो एज आई वाज सेइंग, फर्स्ट देयर विल बी शेल, कि कौन से शेल में। शेल आपको नंबर बताएगा, 1 शेल में है, 2 शेल में है, 3 शेल में है एंड इन्फिनिटी। देन आएगा आपके पास सब शेल। अब इसको हम और डिटेल में देखेंगे। सब शेल बताएगा कि आपके पास एस पी डी एफ किस में इलेक्ट्रॉन है। देन आएगा आपके पास ऑर्बिटल, ठीक है, उसके कौन से ऑर्बिटल में है, और देन आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम एड्रेस निकालते हैं, किसका, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे ऐसा होना चाहिए। चलो नेक्स्ट इज योर डी सब शेल। इसको ऑर्बिटल भी बोलोगे तो गलत नहीं है, बट डी सब शेल के फर्दर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है, डी ऑर्बिटल्स बेसिकली आर डबल डम्बल शेप, ओके। और डी सब शेल के फर्दर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने की वजह से। तो लिखते टाइम इस तरीके से हम बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बट वो जो 5 है वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये 5 है, जैसे उसमें पी एक्स पी वाई पी जेड है पी ऑर्बिटल में, वैसे ही 5 ये है। अब इसके हम शेप्स को देखेंगे। पहला जो है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, मतलब एक्सिस से होके नहीं जा रहे हैं, एक्सिस के इन बिटवीन से जा रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज नॉन एक्सियल ऑर्बिट्स। सो ऑर्बिटल्स in which lobes are present in between the axis, ठीक है, एक्सिस के इन बिटवीन प्रेजेंट होगा। जैसे मैं ले लेती हूँ, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। तो डबल डम्बल मतलब 2 इस टाइप के रहेंगे, और दोनों एक्सिस के बीच में है। और कौन से एक्सिस के बीच में है, एक्स और वाई। तो ये हो गया डी एक्स वाई। इन द सेम वे इफ आई टेक इधर y और यहाँ पे z, आप एक्सेस कुछ भी चूज कर सकते हो, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये भी डबल डम्बल ही इसका शेप है, लाइक दिस, एंड इट विल बी कॉल्ड एज डी वाई जेड। इन द सेम वे देयर विल बी एक्स जेड, एक्सेस कोई भी ले लो। तो इनका जो इस तरीके से शेप आएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, दिस इज डी एक्स जेड। तो ये सारे आपके नॉन एक्सियल है, मतलब एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे। ऐसे ही सेकेंड टाइप जो है, दे आर एक्सियल ऑर्बिटल्स। व्हाट आर एक्सियल ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स in which lobes are present along axis, ठीक है, एक्सिस पे अगर आपकी लोब प्रेजेंट है। जो कि आपके बचे हुए 2 हैं, ये ले लिया हमने x और y। तो आपने देखा कौन सा ऑर्बिटल था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्चुअली इन एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, एक तो y एक्सिस पे और दूसरा x एक्सिस पे, ठीक है। सेकेंड वन जो है दैट इज डी
जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर सिर्फ एक ही एक्सिस पे होता है, दैट इज जेड। आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। अच्छा, जेड की कुछ खासियत होती है कि एक उसके यहाँ पे सर्कल टाइप का बना होता है, जो कि प्रेजेंट होता है कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। सो दिस इज अ सर्कुलर रिंग इन एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, बट इसका शेप जो है कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दिस इज डी जेड स्क्वायर। ओके, इन द सेम वे वी हैव एफ ऑर्बिटल। अच्छा, एफ ऑर्बिटल का जो शेप होता है बेटा वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, इट इज समथिंग लाइक लीफ लाइक। ओके, तो इसको सब शेल लिख देती हूँ। तो एफ सब शेल के फर्दर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको थोड़ा बहुत बेटर थोड़ा आइडिया है ही, लाइक दिस। तो ऐसे फर्दर 7 होते हैं। अब ये कौन कौन से 7 है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट कैन हैव मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल की बात करें, इट कैन हैव मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स है ना, और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है आपके पास। ठीक है, तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसका जो शेप है, शेप इज वेरी कॉम्प्लेक्स, विच इज लीफ लाइक। थोड़ा लीफ लाइक शेप होता है, बट इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो दीज आर योर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ओके, उनका शेप हो गया। यहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होने वाली है, मैक्सिमम। ठीक है, अब ये जो आपके पास 1 सेकेंड, ये जो आपने शेप्स देखे डिफरेंट डिफरेंट, इसको आप किस तरीके से एक एटम के अराउंड विजुअलाइज करो। ठीक है, दैट आई वांट टू शो यू इन वन ऑफ द वीडियोस, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Time to scan. Okay, so we will not see, like it's a 35 minutes. Everything in the known universe is composed of atoms, then we should all have a basic understanding of the atom and the 3 fundamental subatomic particles: the proton, the neutron, and the electron. Therefore, the goal of this chapter is to define in particular
quantum theory was emerging and changing the way we viewed the atom. Okay, we will start from here, okay? And width. In the early 1900s, many brilliant minds were changing the landscape of science. In particular, quantum theory was emerging and changing the way we viewed the atom. One of the great results of quantum mechanics was the orbital, which is where the electrons reside. An orbital should never be confused with an orbit. An orbit is a mathematically defined pathway. For example, how the Earth orbits the Sun. Using classical Newtonian physics, we can predict where the Earth will be on the orbit at some time t and where it was at some time t. In the past, you may have seen a similar simplified model of the atom where the electron is orbiting the nucleus on a mathematically defined pathway, which couldn't be further from the truth. An orbital is a much more complicated concept than an orbit. In fact, we know nothing about how the electron moves around the nucleus. Thus, quantum mechanics demonstrated that electrons did not move around in neat orbits, but existed in regions called orbitals with a fixed amount of energy. In simplest terms, an orbital is a three-dimensional region or shape, and you can expect to find an electron inside this shape 90% of the time. It may help to think of this shape as a boundary surface. The electron is more likely to be inside this boundary shape rather than outside the boundary. Let's apply this concept of boundary shape to the electron of the hydrogen atom, which has one proton in the nucleus and one electron in a surrounding orbital. If you imagine the electron as moving in a random manner with fixed energy around the nucleus, and then imagine that we take a picture of this electron every second for a day, a week, or month, you see that all these pictures laid on top of one another begin to form an electron cloud around the nucleus. Remember, all these hypothetical pictures or data points represent where the electron has been over time. If we now attempt to create a three-dimensional surface to encompass 90% of all these data points, we obtain a sphere, which is often called the boundary surface. The creation of this boundary surface for the hydrogen atom, which is called an s orbital, requires some pretty complex calculus. Thus, if an electron is in an orbital, the electron has a fixed amount of energy, and the orbital is a three-dimensional region around the nucleus that indicates the probable location of that electron 90% of the time. There are many different orbitals for the electrons to reside. The successive solutions or orbitals from quantum mechanics increase in relative energy. When we add the shapes to the energy terms, we get the following electron configuration diagram, which shows all the orbitals available for electrons to reside. The orbitals fall into one of four broad categories: s, p, d, and f orbitals. Interestingly, there is one solution each time an s orbital is obtained, three solutions of the same energy each time a p solution is obtained, five solutions of the same energy each time a d solution is obtained, and seven solutions of the same energy each time an f solution is obtained. In the next chapter, we will revisit this diagram in detail to aid in writing electron configurations. For now, let's just focus on what this diagram represents: the orbitals. And each of these lines abstractly represents an orbital. For example, the first line on the electron configuration diagram is the 1s orbital, and it is a sphere. This is where the first two electrons of an atom can be found 90% of the time. In addition, all of the s orbitals are shaped like spheres. The three 2p orbitals are shaped like dumbbells oriented along the three axes: the 2px, 2py, and 2pz. For convenience, your instructor will often shrink them down to a third of their size
so that they are easier to draw. If we continue to go up in relative energy, the shapes of the orbitals become increasingly more complicated, as demonstrated by the 3D orbital shapes. And it is unlikely that your instructor will hold you accountable for these shapes. Although this diagram may look complicated, remember that each line abstractly represents an orbital, and that all of these orbitals overlap on the same atom. Here you can see that a 1s orbital is the first orbital that the electrons will reside in. Then the 2s orbital is on top of that. Then the 3 2p orbitals are on top of them, and so on, until the necessary amount of orbitals are present to house all of the electrons that an atom may possess. If orbitals are where electrons can be found 90% of the time, in the next chapter we will examine how many electrons are in each orbital and the order in which they are filled by an atom. Okay, so I just wanted to give you a rough idea how atom looks and how they are just present one over the other. Okay, so you got some idea? Let me know. So अभी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा इजी लगेगा. अभी यू विल फाइंड अदर थिंग्स वेरी इजी. डिफरेंट हम रूल्स देखेंगे, शेप्स का आइडिया हो जाएगा, एटम एग्जैक्टली दिखता कैसा है. अभी तक जो भी आपके व्यू पॉइंट्स थे एटम को लेके वो will no longer last, okay, because it's all depends on quantum mechanics. Okay, so now next topic here is difference between orbits and orbitals. Difference between orbits and orbitals. Okay, so it will take some time and we have only 4 minutes left, so I'll continue from here in the next class.